Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will discuss exercise of chapter 9 Kingdom Planta. Question 1 है what are carnivorous plant? Give examples. Carnivorous plants are plants that derive some or most of their nutrients from trapping and digesting animals, typically insect. This adaptation help them thrive in nutrients poor environment. Examples हैं इनकी Venus flytrap, picture plants and sundew. Question 2 है define osmosis and diffusion. Osmosis is the movement of water molecules from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration through a semi-permeable membrane. Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration until equilibrium is reached. जिसके अंदर सेमी परमिएबल इन्वॉल्व होगी वो ऑस्मोसिस है, जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है वो प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है. Question 3 है what is water potential? Water potential refer to potential energy of water in a system. It determines the direction in which water will flow. It is affected by factors such as solute concentration and pressure. Water always from areas of higher water potential to areas of lower water potential. जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा है, जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है वहाँ पे पोटेंशियल भी कम है. इसका मतलब है वाटर हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा. क्वेश्चन 4 है वाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स मोर एफिशिएंटली इन एयर देन वाटर. एयर हैज़ अ हायर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन देन वाटर. डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज फास्टर इन एयर ड्यू टू लोअर डेंसिटी. वाटर हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू गैस मूवमेंट. गैसेज डिजोल्व पुअरली इन वाटर कंपेयर टू देयर अवेलेबिलिटी इन एयर. एयर की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए गैसेज एयर में ज़्यादा इजीली एक्सचेंज हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर. क्वेश्चन 5 है नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. जर्मिनेशन ऑफ सीड जिब्रेलिन्स, स्टेम इलोंगेशन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इथाइलिन, अब्सीजन ऑफ लीव्स अब्सिसिक एसिड्स. क्वेश्चन 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. सेल वॉल. कोलनकाइमा थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज एंड पैक्टिन. स्क्लेरेनकाइमा यूनिफॉर्मली थिक एंड लेग्निफाइड वाल्स. कोलनकाइमा सिर्फ कॉर्नर्स पे थिक होता है जबकि स्क्लेरेनकाइमा पूरा जो है ना वो यूनिफॉर्मली थिक होगा. फंक्शन क्या है? कोलनकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. कोलनकाइमा लिविंग सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं. नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म. फोटोपीरियोडिज्म रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, अफेक्ट फ्लावरिंग एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक लाइट रिसेप्टर्स एंड हार्मोनल चेंजेस. फोटोट्रोपिज्म है ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट डायरेक्शन, हेल्प प्लांट ऑप्टिमाइज लाइट अब्जॉर्प्शन मीडिएटेड बाय हार्मोन ऑक्सिन. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेपोरेशन. ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट अ प्लांट occurs via xylem and phloem, essential for plant growth and metabolic processes. Evaporation is the loss of water in the vapor form from the surface of leaves or any surface. Occurs due to heat energy, help in cooling and water cycle maintenance. Question 7 है define nutrition. The process by which plants obtain and utilize nutrients to grow and develop. Define nutrients. Essential elements like nitrogen, phosphorus, potassium that plants absorb from the soil. Osmotic adjustment. The ability of plants to adjust their internal osmotic pressure to prevent water loss. Primary growth. Growth in length primarily through cell division in the apical meristem. Secondary growth. Growth in thickness or girth typically seen in the woody plant due to activity of vascular cambium. Homeostasis. The maintenance of stable internal environment in the plant despite external changes. अपनी जितनी भी इंटरनल कंडीशंस उनको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है. Cohesion. It is the attraction between similar molecules. And adhesion is the attraction between dissimilar molecules. मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन वो adhesion कहलाती है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कोहेजन कहलाती है. क्वेश्चन 8 है वाई स्पोर्ट इज नीडेड इन टेरेस्ट्रियल लाइफ. स्पोर्ट इन टेरेस्ट्रियल लाइफ इज एसेंशियल फॉर प्लांट टू स्टे अपराइट एंड कैप्चर सनलाइट फॉर photosynthesis. The rigidity of plant cells and tissues, especially xylem and lignin,
provide necessary structural support to withstand gravity and environmental stresses. Question 9 है what is the path of salts and water in vascular plants? In vascular plants, salt and water enter through roots and travel through xylem vessels to the leaves. The movement of water and mineral is facilitated by transpiration and root pressure. Question 10 है how does symplast differ from apoplast? Symplast refer to the interconnected cytoplasm of plant cells through plasmodesmata allowing the movement of water and solutes. Apoplast is the network of cell walls and extracellular spaces where water and solutes move freely without crossing cell membrane. Question 11 है enlist the name of supporting tissues in plants. Collenchyma, sclerenchyma and xylem. These provide structural support to the plant. 12 है what are the annual ring? Define primary and secondary growth in plants. Annual rings are concentric layers in the stem of woody plant that represent 1 year of growth. Primary growth is increased in length due to cell division in apical meristems. Secondary growth involves the thickening of stems and roots. It mainly due to activity of vascular cambium. Question 13 है what happens to primary tissues of a stem when secondary growth occur? When secondary growth occur, primary tissues are pushed outward. The vascular cambium produce secondary xylem and phloem resulting in increased girth. वहाँ पे जो है ना विर्थ इंक्रीज होगी और जो प्राइमरी टिश्यूज हैं उनको बाहर की तरफ पुश कर दिया जाएगा. Question 14 है why does the wood of many tropical trees lack annual rings? इसके पीछे 5 रीजंस हैं बेसिक. कंसिस्टेंट क्लाइमेट. ट्रॉपिकल रीजन्स हैव ईयर राउंड वार्म टेम्परेचर एंड रेनफॉल. कंटिन्यूस ग्रोथ. Trees grow continuously throughout the year without seasonal breaks. No dormancy, there is no distinct dry or cold season to slow growth. Lack of seasonal variation, no clear periods of fast and slow growth like in temperature climate. Irregular growth patterns, growth is influenced by factors like rainfall, नो डिस्टिंक्ट एनुअल साइकिल्स. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से चूंकि ग्रोथ कंटिन्यूसली रहती है सारा साल तो कोई वहाँ पे डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग नहीं बनती. क्वेश्चन 15 है वाई इज हार्डवुड मोर डिजायरेबल देन सॉफ्टवुड फॉर मेकिंग फर्नीचर. हार्डवुड इज मोर डिजायरेबल देन सॉफ्टवुड due to these 5 reasons. Number 1, durability. Hardwood are denser and stronger, making them more durable and resistant to wear and tear. Number 2, aesthetic appeal. Hardwood often have more attractive grain patterns and richer color, enhancing the visual appeal of furniture. Number 3, resistance to damage. Hardwood are less likely to dent, scratch, or rap over time compared to softer woods. Number 4, longer lifespan. Furniture made from hardwood typically lasts longer due to its strength and resilience. Number 5, better finishing. Hardwood take stains, varnishes, and furnish better, resulting in a smoother, more polished surfaces. Question 16 है what are the types of movement in plants in response to stimuli? The types of plant movement in response to stimuli include tropic movement, nastic movement, and turgor movement. Tropic movement, it is a directional growth in response to environmental stimuli. It is further classified into 4 types. Phototropism, movement toward or away from light. Geotropism, movement in response to gravity. Hydrotropism, movement toward or away from water. Thigmotropism, movement in response to touch or physical contact. Number 2 है nastic movement, no directional response to stimuli. Number 1 है seismonasty, movement in response to mechanical stimuli. Thermonasty, movement in response to temperature changes. Nyctinasty, movement in response to light dark cycles. Number 3 है turgor movement, movement caused by changes in turgor pressure. One is leaf folding opening due to changes in water pressure in cells. And number 2 है flower opening and closing affected by turgor pressure in the flower cells. If you find this video helpful, like this video and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.